हेलो डॉक्टर नायक साहब, यहाँ पर जितनी भी बातें हुई मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश में हुई और यहाँ पर सब इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं कि वो आप सिर्फ इंग्लिश समझ सकें। मोस्ट प्रोबेबली तो जो भी आपके लेक्चर या भाषण होने चाहिए थे ना, वो यहाँ पर लोकल भाषा में होने चाहिए थे। Excuse me, brother. Excuse me. Let me coordinate. We have been called here. Zakir has been invited by the organizers here to give a talk in English and have a question answer. That what questions you have to address, I would request you to kindly after the program address to the organizer. क्वेश्चन मेरा बाकी है, क्वेश्चन मेरा बाकी है। हाँ, so you put forward your question. उर्दू में भी अगर आप क्वेश्चन put forward करेंगे, इंशाल्लाह अगर स्पीकर उसको he'll explain English and answer it. नहीं बुरा है वेद और शास्त्र, नहीं कुरान बुरा है, बिना समझी बातें और बेसमझा व्याख्यान बुरा है। समझो तुम अपनी बातों और सबका ध्यान बुरा है। अपने अपने हिसाब से सोचो कि उस प्रभु का सम्मान नहीं बुरा है। और यूनिवर्सल ब्रदरहुड के पहले से जहां भी कोई बातें होनी चाहिए वहां पर मजहब की कोई बात नहीं होनी चाहिए, मजहब से ऊपर उठकर बात होनी चाहिए, क्योंकि मजहब से ऊपर उठना ही उस अल्लाह ताला को पाना है, उस परमात्मा को पाना है। और पहले गॉड का मीनिंग समझो कि गॉड का मीनिंग क्या है। गॉड गॉडेस कुछ नहीं होता है। GOD, दैट सुपर पावर इज कंट्रोलिंग द नेचर एंड दैट नेचर इज हैविंग 3 पार्ट्स, GOD गॉड, G for generator, O for operator, D for destroyer. That nature is generating us, that nature is operating us, that nature is destroying us. We are being generated, we are being operated, we are being destroyed. इसमें गॉडेस और गॉड का मीनिंग कुछ भी नहीं है और गॉड का असली मीनिंग कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला गॉड से ऊपर है, परमेश्वर गॉड से ऊपर है, परवरदिगार गॉड से ऊपर है। Thank you very much, brother. The brother has summarized my lecture in a very short way, alhamdulillah. I thank him. He rightly said there is no God and goddess. That's what I explained. He explained in Hindi so that those who don't understand English can understand. I would like to thank you, brother. He explained very well. There is no God, there is no goddess. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala is superior, and I agree with him. Thank you, brother. And he rightly said that there should not be different religions. I agree with you. There should not be different religions. Because Quran says in Surah Al-Imran, chapter 3, verse number 19, Inna Dina Indallahi Islam. The only way of life acceptable is the person who submits his will to Allah subhanahu wa ta'ala. And I agree with you, brother, that if you fight amongst yourself in religion, there's bound to be differences. And there should be no differences. And the brother also made certain comments that Shias, etc., and different religion, and there are 73 firqas. I can give that answer. It requires time. If you want to know the answer, you can pose it. I'll give you the reply for that also. Why talking about different firqas, etc. But the brother rightly says that there should be only one religion, one way of life. And that is submitting your will to Allah subhanahu wa ta'ala. If you believe in that, there has to be universal brotherhood. If you don't believe in that, there is bound to be disharmony. Thank you very much, brother.